Hello everyone. In this video we are going to discuss how to change the voice. As far as English language or English grammar is concerned, there are two kinds of voice, active and passive. इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम चेंज द वॉइस करते हैं। और जहाँ तक इंग्लिश ग्रामर का सवाल है, इंग्लिश ग्रामर में दो तरह के वॉइस हैं, एक है एक्टिव वॉइस एंड दूसरा है पैसिव वॉइस। First of all, we are going to see the uses of active and passive voice. Active and passive. The equation of active voice is subject plus helping verb plus verb in either first, second, third, fourth or fifth and then object. Active voice में इन पांचों में से there are 5 forms of the verb. तो 5 forms of the verb में से कोई एक फॉर्म इस्तेमाल होता है। Subject plus helping verb plus verb in either first, second, third, fourth and fifth and then object. This is the equation of active voice. Now let's have a look at the equation of passive voice. Passive voice की equation है object plus helping verb plus verb in third form plus by and at the end subject. Passive voice में सिर्फ एक ही verb का form इस्तेमाल होगा and that is the third form. In active voice, we may use all the 5 forms of the verb, but in passive voice, only third form of the verb is used. At the beginning of active voice, we use subject, but at the beginning of passive voice, we have to use the object. Active voice start होता है subject से, लेकिन passive voice start होता है object से. Now, when do we use active voice? The sentences of active voice are used whenever we have to give importance or whenever we have to highlight the subject. एक्टिव वॉइस क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, कब यूज़ करते हैं? एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल उस टाइम पर होता है जब हमको सब्जेक्ट यानी द वन हु डज द वर्क, जो काम करने वाला शख्स है, अगर उसको इम्पोर्टेंस देना है, हाईलाइट करना है, तो वे यूज़ एक्टिव वॉइस. एंड पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेनेवर वी हैव टू हाईलाइट द ऑब्जेक्ट. हमको पैसिव वॉइस उस टाइम पर यूज़ करते हैं हम लोग जब हमको किसने काम किया इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन जो काम हुआ वो इम्पोर्टेंस है, उस टाइम पर हम पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट. नाउ दिस इज द सेंटेंस ऑफ एन एक्टिव वॉइस. व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? स्टूडेंट्स. Had helping verb, completed verb in third form and the remaining part after the verb is the object. Students had completed the assignment. Now if the same sentence is supposed to be converted into passive voice, वो कैसा हो जाएगा? What is the object? The assignment. So at the beginning we have to use object, assignment. So here this is the object. After that helping verb. What is the helping verb? Had. Had is converted to had been in passive voice. Had जब भी helping verb रहेगा तो passive voice में convert करते टाइम had क्या में convert हो जाएगा? Had been. Completed third form of the verb. यहाँ पर third है, passive में तो third रहेगा. अगर यहाँ पर first form भी होता या ing form भी होता तो passive में उसको हमको third form में convert करना होता है. Assignment had been completed by students. ये students subject will be used at the end. Have you understood? Now we are going to have a table. That table will surely help you to understand the entire structure of active and passive voice. अब मैं आपको एक टेबल बताऊंगा, उस टेबल की मदद से आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा. Let's have a look at the table. This table will surely help you to understand the entire concept of active and passive voice. इस टेबल की मदद से आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस या पैसिव टू एक्टिव वॉइस में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, इस टेबल से आपको काफ़ी मदद मिल सकती है. Now see here, I have made a table having 3 columns. The first column is of tense, second column is of active, that means active voice, and third column is of passive voice. इन टेबल में हम ये देखेंगे कि कौन से टेंस में, एक्टिव में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ होता है और फॉर्म ऑफ द वर्ब्स का यूज़ होता है. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट टेंस. फर्स्ट टेंस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. इन एक्टिव वॉइस
of past continuous tense, helping verb was or were is used plus verb is used in ing form. एक्टिव वॉइस के पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है? was और verb कौन से फॉर्म में यूज करते हैं? verb in ing form. Now while converting it into passive voice, we have to make some changes in the helping verbs. So was और were क्या हो जाएंगे? was being or were being plus verb will be used in third form. Then the second tense is past continuous tense. In past continuous tense of active voice, we use the helping verbs am, is, are. एक्टिव वॉइस के पास कंटिन्यूस टेंस में कौन से वर्ब्स का इस्तेमाल होता है? एम, इज, आर. और वर्ब कौन से फॉर्म में रहेंगे? वर्ब इन आईएनजी फॉर्म. आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स राइटिंग, रीडिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, ड्राइविंग एक्सेट्रा. दीज वर्ब्स आर कॉल्ड एज verbs in ing form. And when we convert it into passive voice, so this am, is, are, these helping verbs are changed to either am being, is being or are being, plus verb will be used in third form. Then the next tense is past perfect tense. In past perfect tense active voice, past perfect tense के active voice में हम helping verb had use करते हैं plus verb is used in third form. And when we convert it into passive, तो had क्या में convert हो जाता है? had been. And here the verb will be in third form. Then next we have present perfect. It is not continuous, it is perfect. Let me make a correction there. It is present perfect, not continuous. So in present perfect we use helping verbs have or has plus verb in third form. And when we convert it into passive voice, have और has क्या हो जाते हैं? have been और has been, और यहाँ पर verb third form में ही रहता. Then the next tense is future perfect. In future perfect's active voice, future perfect के active voice में हम shall have और will have का use करते हैं और verb third form में use होता है. And the same is converted in shall have been or will have been plus verb in third form in passive voice. Then let's proceed for the next tense, which is simple past tense. Simple past tense. In active voice of simple past tense, we do not use any helping verb. एक्टिव वॉइस के सिंपल पास्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं इन द अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस, एंड द वर्ब इज यूज्ड इन सेकंड फॉर्म. देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन द पॉजिटिव सेंटेंस एंड द वर्ब इज यूज्ड इन सेकंड फॉर्म. But when we convert it into passive voice, so we have to use the helping verbs. And which helping verbs are used? Was and were plus verb in third form. In simple present tense active voice, there is no helping verb plus verb is used either in first form and es form. I am talking about affirmative. मैं अफर्मेटिव की बात कर रहा, पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात कर रहा. हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है और वर्ब कौन से फॉर्म में होता है? फर्स्ट फॉर्म में या ईएस फॉर्म में. जब हम उनको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है आइदर एम, इज, आर. ये तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का यूज हम करते हैं प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म. But when we convert the sentences of simple past into negative, simple past का sentence जब आप negative में convert करते हो तो आपको वहाँ पर did helping verb assume करना पड़ता है, did. Okay, and when we convert the examples of the sentences of simple present into negative, then we have to assume the helping verbs do or does. नेगेटिव्स में और इंट्रोगेटिव में. अफर्मेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा. नेगेटिव में सिंपल पास्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब रहेगा? डिड. इंट्रोगेटिव में भी डिड. एंड इन सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज डू और डज इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एंड द नेक्स्ट टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस, वी यूज हेल्पिंग वर्ब्स shall and will plus verb in first form. And when it is converted to passive voice, we use shall be or will be plus the verb is used in third form. This was all about the table. How many tenses I have written here? 8 tenses. And how many tenses are there? 12 tenses है. यहाँ पर मैंने सिर्फ 8 tenses mention किया. So there are 4 such tenses. 4 ऐसे tense है जो active voice में ही रहेंगे, वो passive में convert नहीं होते हैं. The first is
फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस होना चाहिए था, बट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज नॉट, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस, इसलिए मैंने वो मेंशन नहीं किया, ये एक टेंस हो गया। इसके अलावा ऑल द थ्री परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये तीन है। इसके अलावा फ्यूचर कंटिन्यूस के अलावा और तीन टेंसेस कौन से हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये तीन और फ्यूचर कंटिन्यूस, ये चार टेंसेस ऐसे हैं जो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो एक्टिव से एक्टिव में रहेंगे। ओके, हैव यू अंडरस्टूड द टेबल? नाउ वी आर गोइंग टू हैव फ्यू एग्जांपल्स। Let's have few examples of active and passive voice. Now we are going to see how to convert the examples of past continuous tense active voice into passive voice. So past continuous tense active voice. What is the equation of active voice? Subject plus helping verb plus object. Okay. And the equation of passive voice, object plus helping verb plus verb in third form plus by plus subject. First example, he was writing a letter. Now this is the example of past continuous tense. What is the subject in the sentence? He. Was is helping verb, writing is ing form of the verb and a letter is object. According to the equation of passive voice, what are we supposed to use at the beginning? Object, followed by the helping verb, then verb in third form, then by, then subject. So what is the object? A letter is object in the sentence. Now while converting it into passive voice, we'll write the object first. So a letter is written. Okay, a letter. Now using of helping verb in active voice depends upon the subject. Active voice में helping verb का use किस पर depend करता है? Subject पर। और passive voice में the use of helping verb depends upon the object. Now a letter, is it singular or plural? Singular. With singular what do we use? Was. If it could have been plural, if would have been plural, then we have to use here verbing. यहाँ पर letter singular है तो singular के साथ क्या आएगा? Was being. A letter, what is the helping verb in past continuous tense? We had seen just now, we have seen the table. उस टेबल में हमने देखा कि was and were क्या में कन्वर्ट हो जाते हैं? Was being और were being में. So as a letter is singular, we have to use was being. A letter was being, and here we have to use the third form of the verb, written. Even though here the verb is in ing form, active में कौन से फॉर्म है? ing, लेकिन पैसिव में उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। A letter was being written by, he का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? him, ये हो गया उसका पैसिव वॉइस। Then second example, Rahul was playing marbles. What is the object here? Marbles. Passive voice में पहले हम लिखेंगे marbles. Okay, now say marbles is plural. With plural what do we use? Was or were? We have to use were. Though was is given in the active voice, लेकिन पैसिव में marbles जो है plural है, तो plural के साथ हम verbing का इस्तेमाल करेंगे। Marbles were being played by Rahul. It is very simple. Next example, children were eating bananas. What is the object in the sentence? Bananas. While converting it into passive voice, we have to use the object first. So we have used here bananas. Is bananas singular or plural? It is plural. So with plural what do we use? Verbing. Bananas were being eaten by children. Bananas were being eaten by children. Next example, she was washing clothes. What is the object here? Clothes. Passive में पहले क्या लिखेंगे हम? Object. So clothes. Is it singular or plural? Plural. So यहाँ पर plural के साथ verbing. Clothes were being washed by her. And the last sentence, teacher was teaching a lesson. What is the object here? A lesson. Passive में पहले हमको object लिखना पड़ेगा. A lesson. Now a lesson is singular. So with singular what do we use? Was being. A lesson was being taught. What is the third form of teaching? Taught. A lesson was being taught by teacher. This was all about converting the active voice sentences of past continuous tense into passive voice. Now we'll see how to convert the sentences of present continuous tense into passive voice.
the active voice sentences of present continuous tense into passive voice. Now let's see how to convert the examples of present continuous tense into passive voice, the active examples of present continuous tense into passive voice. So here we have got the examples of present continuous tense in active form. The first example, Samir is driving a car. So what is a helping verb in the sentence? Is. What is the subject? Samir. What is the verb? Driving. And what is the object? A car. In passive voice, we have to write the object first, a car. Now a car is singular. So in singular, we have seen the table. In present continuous tense, M is R. These three helping verbs are used in active voice with the ing form of the verb. टेबल में हमने ये देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस में कौन से एग्जाम हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं? एम इज आर. और कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब रहती? आईएनजी. लेकिन उसको पैसिव में कन्वर्ट करते टाइम पर एम इज आर कन्वर्ट हो जाते हैं एम बीइंग, इज बीइंग और आर बीइंग, और वर्ब तो पैसिव में थर्ड फॉर्म में रहेंगी. सो अ कार इज सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ रहेगा इज बीइंग. A car is being driven. Driven is the third form of verb. यहाँ पर एक्टिव में ing भी रहा तो पैसिव में वो थर्ड फॉर्म हो जाएगा. A car is being driven by Samir. Second example, students are asking a question. So what is the object in the sentence? A question. A question is the object. So in passive voice, we have to write the object first. A question. And a question is also singular. A question भी कौन से फॉर्म में? सिंगुलर. तो उसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा? is being. A question is being asked. Third form of asking is asked by students. Next example, I am distributing chocolates. What is the object here? Chocolates. Passive voice में हम पहले क्या लिखेंगे? Object. Now chocolates. Chocolates is in plural form. And with plural what do we use in present continuous tense? Are. तो यहाँ पर helping verb क्या रहेगा? Are being. Chocolates are being distributed by me. Then next example, you are helping the poor family. What is the object here? The poor family. So while converting it into passive, we'll write the object, the poor family, at the beginning. Now, the poor family is in singular form. So with singular, we have to use is being. Poor family is being. Then the third form of helping is helped by you. The poor family is being helped by you. This was all about how to convert the sentences, how to convert the active sentences of past continuous tense and present continuous tense into passive. I hope you have understood it. In the next video, we'll see how to convert the past perfect, present perfect and future perfect active voice sentences into passive voice. Thank you.